मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज हम पार्ट सेकंड पे पहुंच गए हैं अपने फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के अगले टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए। हमने पहले 3 टॉपिक्स फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिए हैं, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ अ चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. So let's see what are the next few things which we have to learn in this topic. In the mid 18th century, Europe was not the same as we see it now. We see different countries like France, Germany, Spain, Portugal, Britain, etc. But it was not the same earlier. So what was there? There were different empires and people belonging to diverse backgrounds who didn't had any shared culture or any idea of nationalism or a country, what a country is, and etc. All these things were not there. So in Europe there were different traditions, cultures, different empires were there, and these people, the people who were living in under these emperors or under these rulers, they didn't had a common identity as such. They had their own individual smaller groups and their smaller identities, and no idea of a nation state was there at that time. So there was no idea of a nation state. Rulers had their own autonomous territories and they often fought with each other. They often saw each other as their enemies. Next is people of diverse identities lived in these areas. They had different customs, different traditions, and many other differences. They belonged to different ethnic groups, and that was also a reason why they were not able to unify themselves as a nation. Next is they had different languages, different customs, different traditions, etc. So all these diversity, or you can say differences, played a big role, a vital role in not allowing these people to have a collective identity or an idea of a nation. For example, the Habsburg Empire, which ruled over Austria-Hungary, that is the western and central part of Europe, was also a patchwork of diverse geographical, political, as well as economic spheres. Next is the Habsburg Empire. Let us see. The Habsburg Empire was a very vast empire during the mid 18th century in Europe, and the Habsburg Empire ruled over Central and Western Europe. It was a patchwork of many different regions and different types of people. People belonging to different geographical regions, having different languages and different social order. There was no feeling of idea of collective identity. So different social order means, as we have read in the French Revolution, there was first state, second state, and the third state, that is nobility, clergy, and the common people. So there were certain privileges for the nobility and clergy, and the common people were deprived of many rights. The only binding force for these people during the mid 18th century in Europe was the loyalty towards their emperor. राजा के प्रति उनकी जो वफादारी है, उनकी जो बिलोंगिंगनेस है, सिर्फ वही एक बाइंडिंग फोर्स थी उनको इकट्ठा रखने के लिए. मूविंग ऑन, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, दैट इज आवर फर्स्ट टॉपिक. द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. एज यू ऑल नो, द एरिस्टोक्रेसी, that is the elite class, had many privileges like collecting taxes, not giving taxes, voting rights. They were rich, they were holding big properties. And so we will learn what was the aristocracy and how this new middle class, the idea, the concept of a middle class has emerged. So the aristocracy, as we all know, was the dominant class across the continent. जितने भी empires थे, जितने भी साम्राज्य थे, उन सभी में जो aristocracy class थी, उसमें क्या हो रहा था? वो rich थे, वो powerful थे, उनके पास बहुत सारी property थी, and they had relations with each other. They enjoyed privileges by birth. They owned large estates in the countryside and also large houses in the towns. Generally, they spoke French, though the common people and the poor people had different dialects and languages. But the aristocracy amongst various empires generally spoke French. Families were connected through
ties of marriages. They had marriages in different empires, different families. Next is the aristocracy and the middle class. Let's see, before coming of the middle class, what was there in यूरोप. यूरोप में जब मिडिल क्लास आई, मध्यम वर्ग के लोग आए, उससे पहले किस प्रकार के लोग थे? एक तो रिच थे और दूसरे कॉमन पीपल. कॉमन पीपल किस प्रकार के थे? द कॉमन पीपल वर जनरली पीजेंट्स, वो फार्मर्स थे. ठीक है. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ दीज पीपल, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप वेयर दीज पीपल लिव्ड, they were generally tenants and small owners. They were having very small lands, or they were working on somebody else's land and growing crops. On the eastern and central part of Europe, they had large land holdings, but serfs worked there. Serfs are agricultural slaves, means they were working for the large landlords and generally without any salary, substantial salary. Next is moving further in the aristocracy and the middle class. So what has happened? We have learned up till now that the aristocracy had powers, property, privileges, etc., and the poor peasants had nothing socially, economically or culturally. So there was the rise of the new middle class. तो अब क्या हो रहा है? एक और नई शक्ति या नए लोगों का ग्रुप वहाँ पे आ रहा है, या फिर नया ग्रो हो रहा है. दे वर ग्रोइंग, दैट इज़ द न्यू मिडिल क्लास. और ये क्यों ग्रो हुआ? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया यूरोप में. तो पहले ब्रिटेन में, इंग्लैंड में आया, उसके बाद बाकी सारे देशों में फैल गया. तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक नए प्रकार के लोग, जिनको हम न्यू मिडिल क्लास बोल रहे हैं, वो इवॉल्व हुए. लेट्स सी. सो अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन हु वर्कड इन द कंस्ट्रक्शन साइट, who worked on the construction site, who worked in factories, who were other professionals, who were doing business at the marketplace, etc. These were the people who constituted the new middle class, having industrialists, businessmen, professionals, etc. They were generally educated and had liberal views. वो ज़्यादातर उनमें से शिक्षित थे और उदारवादी विचार थे उनके. तो इसीलिए उनके दिमाग में बार बार ये बातें आ रही थी कि ये जो प्रिविलेजेस हैं एरिस्टोक्रेसी के, एलिट क्लास के, उनको ख़त्म करना चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए. तो देखते हैं ये जो न्यू मिडिल क्लास हैं और ये जो इनके लिबरल आइडियाज़ हैं, वो क्या चाहते थे. दे वांटेड टू एबॉलिश द आइडिया ऑफ प्रिविलेज बाय बर्थ. तो वो क्या चाहते थे? जो जन्म से ही कुछ लोगों को स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, स्पेशल अधिकार, विशेष अधिकार मिले हुए हैं, उनको ख़त्म करना है. और क्या सोच रहे थे वो? दे वर ऑल्सो थिंकिंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द term means liberal. So this word liberal has came from liber, which is a Latin word which means free, free of slavery, free from exploitation, free from forcefully doing things, free from working as slaves, etc. So freedom of the individual they wanted. What else they wanted? Equality before law. Another is they wanted government by consent. वो ऐसी सरकार चाहते थे जो लोगों की मर्जी से बनी हो, उनके ऊपर थोपी ना हो और वो फोर्स ना हो ऐसी कोई सरकार चुनने के लिए. दे वॉन्टेड एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड प्रिविलेजेस. जो जन्म से ही अधिकार मिले हुए हैं उनको ख़त्म करना चाहते थे. एक और मांग, जो मुख्य मांग थी उनकी, कि एक संविधान होना चाहिए जिससे सारा देश चले, ना कि किसी राजा के सोचने से या उसके एक्शन से. आगे और क्या चाहते थे? अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थ्रू पार्लियामेंट. वो ये भी चाहते थे कि एक पार्लियामेंट हो जिसमें कि लोग इलेक्ट होके जाएं और एक डेमोक्रेटिक सेटअप बने, और जो ये मोनार्की है इसको या एरिस्टोक्रेसी है उसको हटाया जाए. आगे चलते हैं. लेट्स मूव फर्दर. मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म. बट देयर वर अ फ्यू ड्रॉबैक्स ऑल्सो ऑफ द आइडियाज विच दे हैड अर्लियर. तो जो न्यू मिडिल क्लास आई, शुरुआत में उनके आइडियाज़ में कुछ डिसएडवांटेजेस या कुछ ड्रॉबैक्स भी थे. जैसे अर्लियर दे डिडंट वांट वोटिंग राइट्स फॉर एवरीवन. इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में वो सभी के लिए वोट करने का अधिकार नहीं चाहते थे. सिर्फ जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टीड मैन हैं, उनके लिए राइट चाहते थे, और विमेन के लिए भी वो वोट करने का अधिकार नहीं चाहते थे. सो देयर वर two kinds of people, that is the non-propertied and women
who didn't get voting right in the beginning. They also wanted free market and movement of goods without tax restrictions. So now we are coming to the economic part. Okay, we have learned that socially they wanted an end to privileges, they wanted equality before law, and politically also they wanted voting rights. Now coming to the economic front, they wanted free movement of goods and services because most of them were businessmen and professionals. So they wanted that the taxes which were imposed on goods moving from one city to another should be reduced and should be to a minimal or removed, so that free trade could be done and the prices of goods and services are lesser, cheaper as compared to earlier. So they also wanted removal of weights and measurement standards at different places. जो अलग अलग weight और measurement के standards थे यूरोप में अलग अलग शहरों में, उन सभी को स्टैंडर्डाइज किया जाए और एक सिंगुलर स्टैंडर्ड बनाया जाए ताकि जो वैल्यू है, जो क्वांटिटी है किसी वस्तु की, किसी चीज़ की, वो सेम रहे अक्रॉस डिफरेंट सिटीज़. मूविंग ऑन, they also for the on the economic front, for achieving all these things, that is free trade, standardization of weights and measurements, lesser number of currencies, etc., they have formed a group that is known as Zollverein. तो Zollverein नाम का एक ग्रुप बनाया उन्होंने, एक एसोसिएशन, एक यूनियन ट्रेडर्स की और प्रोफेशनल्स की, जिसने क्या किया, वो सबसे पहले तो वो एक कस्टम्स यूनियन थी. उसके बाद कब फॉर्म हुई? इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1834. It abolished most of the tariff barriers, that is trade barriers, that is taxes on movements of goods from one place to another. They reduced the currencies from 30 to 2 currencies. Moving on. So what was the conclusion? That the new liberal class, the new middle class had liberal ideas which gained popularity amongst the masses. They wanted liberty and freedom politically, socially, as well as economically. So to a certain extent, they also succeeded in implanting the idea of liberal nationalism. But after the defeat of Napoleon in the year 1815 in the Battle of Waterloo, again there was a series and a sense of conservatism which have arrived, which wanted to change the things which the liberals have imposed, that is the idea of equality before law or the abolition of monarchy. All these things, इन सब चीज़ों को जो ये कंजर्वेटिव्स थे ये ख़त्म करना चाहते थे. तो क्या डिमांड्स थी कंजर्वेटिव्स की? द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व्ड. जो ट्रेडिशनली जो चीज़ें हमारी सोसाइटी में, हमारे स्टेट में, यानी कि हमारे रीजन में जो चल रही हैं, जैसे कि अब कौन कौन सी चीज़ों को बचाना चाहते थे? मोनार्की को. वो चाहते थे कि मोनार्की ही एक अच्छा सिस्टम ऑफ रूल है. चर्च को, चर्च की जो अथॉरिटी थी उसको वापस लाना चाहते थे. उसके बाद सोशल हायरार्कीज, दैट इज़ फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, जैसे कि हायर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, इन सभी जो हायरार्कीज हैं उनको वापस लाना चाहते थे समाज में. उसके बाद प्रॉपर्टी एंड द फैमिली, दे ऑल्सो वांटेड large land holdings, property rights and extended families, etc. Moving on. So for achieving all this and to reduce and to change what the liberals have done, they have organized a Vienna Congress in the year 1815. So 1815 में एक ऐसी ही मीटिंग हुई जो कि होस्ट की ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने 1815 में. किन किन लोगों ने उसमें भाग लिया, किन किन लार्ज देशों ने? उन सभी ने जिन्होंने फ्रांस को हराया, जैसे कि ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, amongst other nations. So a treaty of Vienna of 1850 was signed, in which many things like the authority of church, like the aristocracy, the monarchy were re-established. So new states were established and the boundaries of France got reduced. And also the conservatives did not accept any criticism or dissent. उनको आलोचना अपनी बिल्कुल पसंद नहीं थी और उनको ना
भी सुनना पसंद नहीं था, यानी कि जो उन्होंने, जैसे कि एक मोनार्क या डिक्टेटर करता है, वट एवर ऑर्डर ही इज गिविंग मस्ट बी फॉलोड विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। तो इस क्वेश्चनिंग को, इस क्रिटिसिज्म को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया? दे इम्पोज सेंसरशिप ऑन मीडिया, न्यूज़पेपर्स, प्लेज एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़ ऑफ द कॉमन पीपल थ्रू विच दे कैन रेज देयर वॉइस। जिन जिन साधनों से वो अपनी आवाज़ उठा सकते थे, उन सभी को बंद करने की कोशिश की सेंसरशिप से। तो यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि सेंसरशिप क्या होती है। जब स्टेट या गवर्नमेंट मशीनरी किसी हिस्से को, किसी न्यूज़ के, किसी समाचार के, किसी व्यू के रोक देती है मेन स्ट्रीम मीडिया या आम लोगों के सामने आने से। व्हेन द गवर्नमेंट और द स्टेट मशीनरी स्टॉप्स अ पार्ट और द होल न्यूज़, व्यू, idea from being published or from being shown to the general public, that is known as censorship. Now moving on, let us move on to the last part, that is assignment. So we have seen and learned many things today. I'm giving you some questions. You must complete these today itself, and by the evening you must write all the notes, make all the notes, and answer the following questions. Let's see what are the important questions which are there. Question number 1, which empire ruled over Austria-Hungary during the mid 18th century? Mid 18th century में किस empire ने रूल किया ऑस्ट्रिया हंगरी पे? नेक्स्ट इज Next question is, which congress was held to reinstate conservative ideas in Europe? Who organized it and who attended it? The next question is, write a short note on Zollverein. Next is, explain the idea of liberalism in social, political and economic spheres. Socially, politically और economically जो आइडिया है लिबरलिज्म का, वो क्या क्या चाहते थे, उनकी मेन डिमांड्स या मेन व्यूज़ क्या थे. Next and the last question is, why the people, which people constituted the new middle class?